in power within us. So let me start with a question to everyone, to my younger friends. कितने लोग social media में हो आप लोग? Everyone? Yes, we all have our presence in internet. We have our presence in social media platforms. We know we need to be updated every time and again. So world में बताया जाता है कि सबसे popular format is reels. We are living in an age of not in the digital age even. We have already entered intelligence age बोलते हैं हम लोग इसको, intellectual age, with the advent of with the introduction of AI. अगर बोले AI को हम समझते हैं basically chat GPT, which is just a part of AI, which is generative AI, which was introduced in the year 2022 November by OpenAI. Chat GPT was introduced. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, पेपर्स में पढ़े होंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप हम लोगों ने देखा चैट जीपीटी के रूप में. दिस इज वेयर कंफ्यूजन लाइज. वी डोंट नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंटायरिटी. आई एम नॉट क्लेमिंग कि हम लोग सबको सब कुछ पता है, बट वी आर एट अ लेवल ऑफ चैट जीपीटी. वी नीड टू अपग्रेड अवरसेल्फ. एट द सेम टाइम एआई लिटरेसी, मीडिया लिटरेसी के साथ अभी हम लोग बोलते हैं एआई लिटरेसी, बिकॉज we have already entered AI age. We cannot ignore AI anymore. It is already taking over our lives. So it is very crucial and very important that we should learn AI. What are the positive side of AI? सब कुछ का positive and negative effect होता है. Whenever technology came, there it comes with positive as well as negative effect. But at the same time, how you take leverage out of this beautiful technology. It can be a, जैसे कि हमारे previous session में डॉक्टर दास उन्होंने बताया कि it is an atom bomb. It can be a nuclear bomb. Yeah, artificial intelligence is power. और इस पावर को संभालने के लिए वो इंटेलिजेंस होना जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूज इट फॉर क्रिएटिंग डीप फेक्स, अदर और एल्स यू कैन यूज इट फॉर क्रिएटिंग डे टू डे न्यूज प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है. वी ऑल नो उड़ीसा बिकेम द फर्स्ट स्टेट to introduce the first AI anchor in the country, Lisa. So we have been experimenting with AI models, but so it is very crucial and very important how we use over the years, over the period of time. Maybe we will be training this kind of models for more expert uses in our life. But at the same time, it is in the evolving phase. AI har din, it is evolving every new day. We are at the initial stage of all experiments. सबको पता है कि आज जो टूल रिलेवेंट है वो कल रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि उसको रिप्लेस करते हुए नया कोई टूल आ गया, या फिर whatever tool is already existing have additional features we are not aware of. ChatGPT, which was introduced in November 22, was now the outdated model. Now we have already come upon the latest version. दो वर्जन हम लोगों ने चेंज कर चुका है. ट्रायल्स एंड एरर्स, experiments are going on in every sphere, but it is for us, since we are journalists, we are communicator, we are media educator, we must know how to be with the technology, and we need to learn how best we can use technology. किसी को इग्नोर करके ज़्यादा दूर नहीं रह सकते. रेदर इंक्लूसिवनेस, अगर एआई को साथ ही लेके चलना है तो how we can incorporate AI that we can think of for beautiful things like, जैसे कि हम लोग अभी भी डिस्कशन जब भी चलता है, अगर हम लोग बात करें डिजिटल फॉरेंसिक एंड सिंथेटिक मीडिया. डिजिटल फॉरेंसिक मीन्स क्रेडिबिलिटी, मोरलेस. अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रेडिबिलिटी. फॉरेंसिक और सिंथेटिक मीडिया मीन्स आर्टिफिशियल और क्रिएटेड मीडिया. अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. एक ट्रेंड शुरू होता है सोशल मीडिया में, हम लोग सब करने लगते हैं. जीबीली आर्ट, सब ने हम लोगों ने अपना अपना प्रोफाइल अपलोड करना शुरू कर दिया. दिस इज नॉट द वे हाउ वी यूज. वी मस्ट यूज एआई responsibly. And being media professionals, media educators, it is our responsibility to ensure that whatever is being shared or whatever is being produced by us must be transparent. We must declare them. अगर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स अभी लेटेस्ट हम लोगों ने देखा, पाकिस्तान का डॉन न्यूज़पेपर
यूज करो, लेकिन इतना भी गलती मत करो कि कॉपी पेस्ट ही कर दो. बट वेयर आवर ह्यूमन इंटरवेंशन इज नीडेड, वही जरूरी है जहां हम लोगों को देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा वेदर द हेडलाइन is correct, whether the data that is being provided in the article is cross-checked, is from verified authority, verified sources, not conclusion ठीक से आया है कि नहीं, जो presentation है वो ठीक है कि नहीं. So AI is not going to replace humans. Person or people who know AI can replace you. That is the thing basically. So we need to learn, we need to adopt. At the same time, we need to use AI or synthetic media, so to say, responsibly. That is very crucial and that is very important. Journalism को fourth state का दर्जा दिया गया है. We know we have this responsibility, social accountability. लोग जर्नलिस्ट को क्यों रेस्पेक्ट करते हैं, क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि उनको लगता है कि उनसे थोड़ा ज्यादा हम जानते हैं, इसलिए हमको पूछते हैं. So it is here our responsibility lies to see and ensure that whatever information is provided to the viewers, to the readers, must reach with all the filtration. लेकिन अभी जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को पूछा, who almost every one of us have our presence on social media. So social media is the biggest threat in case if we talk about misinformation and disinformation. Now, what is the difference between social media and conventional media? Social media means there is no gatekeeping. Everyone who has a profile is a publisher. He is an editor. He or she is an editor. But in newspaper organization, we have a series of responsibilities. Reporter collect the news from field and then he or she send the story to the office. वहाँ sub editor है, copy editor है, then it reaches editor in chief. After his approval, the news gets published. But in terms of social media, there is no gatekeeping. No one is responsible. Anyone who has social media profile is a publisher, is an editor. और यही कहीं ना कहीं एक confusion का दौर शुरू हो रहा है. And now with the advent of AI, you can produce beautiful content, confusing content as well, and misinformation, disinformation survives on that. हम लोग देखते हैं अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों ने देखा जितना वार बैटलफील्ड में नहीं हुआ, उतना ज़्यादा सोशल मीडिया में हम लोगों ने जीत लिया. इस्लामाबाद हम लोगों ने कैप्चर कर लिया. वहाँ से वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि दिल्ली बढ़ गए हम लोग. जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एयरपोर्ट हम लोगों ने दखल कर लिया. श्रीनगर में हम लोग कब्जा कर रहे हैं. द battles are being fought on digital front. So responsibility lies कहाँ रहता है, किस तरह से एज ए इंडिविजुअल हाउ आई बिहेव ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. ये सिर्फ मीडिया के लिए नहीं, हर आदमी के लिए ज़रूरी है. whoever uses a smartphone is carrying a very powerful weapon with us. So from this we can create wonderful thing, we can create wonderful movements. At the same time we can bring in destructions, we can spread misinformation and disinformation which can lead to any kind of mob lynching, riots, communal disturbances. बहुत सारी चीज होते हैं, knowingly unknowingly हम लोग करते रहते हैं. This is how the definition has been, this is how fake news has been defined as misinformation and disinformation. मैं लास्ट बेंच में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको पूछना चाहूंगा, आर यू अवेयर व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन? एनीवन फ्रॉम लास्ट, एनीवन हु कैन साइट व्हाट इज द डिफरेंस? प्लीज प्लीज प्लीज. Is an information that is spread deliberately with the intention to cause harm. Wonderful, good. Misinformation is without intention. When you spread wrong information, it is misinformation. Disinformation means when you share any kind of information intentionally. हमको पता है बहुत समय इंटेंशनली होता है. इलेक्शन के समय हम लोगों को सबसे ज़्यादा पता चलता है कि हाउ मिस इन्फॉर्मेशन. प्लीज सिट डाउन. सिमिलरली बहुत सारी चीज़ों में मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन कम्स. दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हमारे अंदर है तो what we can do is we can uh, stop any wrong information which comes to us in the form of misinformation, disinformation or malinformation. 3 MDM हम लोग बोलते हैं normally. So what we can do is we can stop this if we are aware of this. So what can be done is more awareness. As
Lokesh Sharma sir has time and again has in his during his talk he already stressed on how media literacy is very important, how awareness is very important. So awareness हम तो खुद करेंगे, हमारे practices में हम करेंगे, whether it be teaching. If I am a student, I can talk to people. If I am a reporter, I can present those facts through my reports. At the same time, if we can train people, if we can train people on misinformation, disinformation, that is what we are doing. Pradeep sir, me, Rajiv sir, we are part of a network where we are reaching out to people with AI literacy trainings, basically how to adopt, how to perceive AI. How since it is very important क्योंकि पहले से अगर हम लोग किसी चीज को किसी टेक्नोलॉजी को बुरा बुरा बोलना शुरू कर दे वो ठीक नहीं है. पहले जान लो कि वो सही है गलत है, खुद से जानो, किसी के कहने से नहीं. दिस इज द फर्स्ट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट. You have your own intelligence. Artificial intelligence is a collaborator, is a friend, it can be a helping hand, but we all have that original intelligence. We have that. So what we can do is we must use our own intelligence to create this kind of awareness. So we all deal with information. So whenever we are dealing with any kind of information, it is very crucial and very important to check and cross check before it gets published. From whether this information is from a verified source or not, we have to check it time and again. And only then we can adopt, we can accept that. ये बेसिक, क्योंकि अभी जर्नलिज्म बहुत इजी हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोगों को व्हाट्सएप पे ही इंफॉर्मेशंस मिल जाते हैं. इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिकॉर्ड करके भेज देते हैं, अपने काउंटर बाइट्स इंटरव्यूज दे देते हैं. तो देयर इज वेरी लेस स्कोप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. तो सवाल पूछना कहीं ना कहीं कम गया है. सो दिस इज अ वेरी वेरी बहुत गलती हो रहा है अगर हम लोग बोले तो. But at the same time, what we can do is we can time and again ask question. Whenever we receive any kind of information, we must ask the person from where you are getting the information. This is very crucial, how responsibly we deal with information. Whatever little information it may be, 5 Ws and 1 H, जिससे भी वो information बनता है उसको हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ाते हैं. So responsibility lies there. हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, वी कैनॉट इग्नोर internet, we cannot ignore social media, the power of potential of social media and artificial intelligence. Rather than adopt, at the same time use them intelligently. That is very crucial, and that is intelligently as well as ethically. That is very crucial. When we are journalists, we must use any kind of technology ethically. So अभी अभी बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में तो अभी there is no ethical guidelines for most of the news organizations. So when we are using AI tools, AI methodology, it is very crucial and very important. We must have ethical guidelines in place. So जो भी editors हैं, जो भी responsible positions में हैं, editorial positions में हैं, I will also appeal all of you to ensure that if you are using AI, then you must have a AI guideline in place. So world में research हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहे हैं, तो बहुत आगे हम लोग बढ़ रहे हैं. India is also very seriously taking AI, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडिया AI मिशन शुरू किया है. Secondly, India is going to host the second global AI summit in the month of February 2026. Lot more of things. In fact, those who are doing your masters, if you want to opt for PhDs, you can always apply for PhD on AI. So AI is future, AI is going to stay, but at the same time, it is for us to ensure that we are using AI responsibly. So this is all about my बहुत ज़्यादा लंबा बोल दिया शायद, but you please consider, and thank you so much.